Hello dear students, welcome back. Today we're gonna see the third chapter of class 9 English Beehive, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. My dear students, before we go ahead, let's go with the introduction of the chapter The Little Girl. As the title suggests, the little girl refers to our central character, the main character, and she is Kezia. Moreover, the main theme of the story is the relationship between parents and their children. Also, the writer Catherine Mansfield wishes to tell us that children share very deep bond of love with their parents. My dear students, even though young children do not feel that their parents love and care for them because they are strict, and to them, many of their parents' action appears unfair. Like when children grow up, they realize that all the acts of their parents were favorable for them. And in addition to this, the parents were afraid for them, and below their strictness lies a heart full of love for them. So, most importantly, this bond of love between parents and their children has been highlighted in this chapter, The Little Girl. So, my dear students, really very interesting chapter. Pay attention and understand what's there, okay? The bond between the parents and their children. Here we go. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. Now see, my dear children, my dear students, जब आप छोटे थे तब आपको लगता होगा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. जब आप बड़े हुए, ओके, व्हेन यू ग्रू, देन यू केम टू नो दैट कि क्यों आपके पेरेंट्स आपके साथ स्ट्रिक्ट थे. सो व्हेन यू ग्रो अप यू कम टू नो देयर लव टुवर्ड्स यू. सो हियर यू कैन कंपेयर, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो अपने आप को, ओके, इस स्टोरी के साथ कि क्यों बचपन में पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बच्चों की तरफ, और फिर जब जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो वो रियलाइजेशन बच्चों के अंदर आ जाता है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम. ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने पापा के प्रति जो पहले बहुत ज़्यादा डरती थी वो कैसे चेंज हो जाती है. और ये जो है फाइंड एन एको इन एवरी होम, फाइंड एको इन एवरी होम मीन्स सभी के साथ ऐसा होता है. तो आप अपनी लाइफ भी यहाँ पर रिलेट कर सकते हो कीजिया की स्टोरी के साथ. सो हियर वी गो विद द स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. Now, to the little girl means already I talked about, that is Kezia. He means Kezia's father, was a figure to be feared. Figure to be feared means a person to be feared and avoided. Now, for a girl, Kezia, हर फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, कि जिनको देखकर वो थोड़ा डर जाती थी. ऐसे इंसान, ऐसे पर्सन कि जो देखकर थोड़ा वो डर जाती थी. एंड नो शी यूज टू अवॉइड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही मीन्स फादर केम इन टू हर रूम, इन कीजियाज रूम, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. सो वेन एवर अर्ली इन द मॉर्निंग when he used to go for his work, so he used to give her a casual kiss, and in the response she said goodbye to her father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Now her father, when he left, so there was a glad sense of relief. She used to find herself a bit happy. And when she heard the noise of carriage means a हॉर्स कार्ट ले लो आप, ओके, एक
कैमल काट लो। तो वैसे जो कैरियज की जो आवाज़ थी, ओके, जो एक व्हीकल की आवाज़ थी, जैसे ही वो आवाज़ फेंटर और फेंटर होती जाती थी कि डाउन द लॉन्ग रोड, सो शी यूज टू दैट ओके माई फादर इज़ नाउ गॉन, सो शी यूज टू बी हैप्पी देन। अब इस पैराग्राफ से क्या समझ में आता है कि कीजिया के जो पापा थे वो एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिससे कीजिया बहुत डरती थी। अब ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए था कि बच्चे जो है वो अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, आते ही उनको हग कर लेते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपोजिट था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। अब जैसे ही पापा शाम को आते थे, एक बड़ी सी आवाज़, ओके, मोटी आवाज़, और वो आवाज़ सुनकर भी वो थोड़ा डर जाती थी। एंड शी शी व्हेन शी यूज्ड टू नियर द स्टेयरकेस यूज्ड टू हर्ड द लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। और आते ही उनकी ओके कुछ थोड़े ऑर्डर होते वो चालू हो जाते थे। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी if my papers out there and bring me my slippers. So all the things, I means, few things he used to command, that bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet, okay, newspaper, he was asking about the newspaper, mother go and get okay my newspaper from okay out and bring my slippers. So all this command he used to give, so that with the very okay heavy voice, okay, with loud voice. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Kezia, mother would call her. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door. So slowly the girl would slip down. Slip down means come down quietly and unwilling. Okay, so she was, by seeing the father, she was bit afraid, थोड़ी डर जाती थी वो। सो बहुत ही धीरे धीरे से वो आती थी, ओके, अनविलिंग, उसकी इच्छा नहीं होती थी, ओके, बट स्टिल शी यूज टू कम मोर स्लोली, स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, ओके, और धीरे से दरवाजा खोलती थी। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम in a way that was terrifying to the little girl. Now what happens actually my dear students, कुछ बच्चे जो है इस तरीके से लुक से थोड़ा डर जाते हैं। सो ऐसे ही उसके पापा ने भी किया, जो स्पेक्टिकल्स थोड़ा नीचे रखकर लुक्ड एट हर ओवर देम इन द वे दैट वाज टेरिफाइंग टू दैट लिटिल गर्ल Kezia. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know father. तो देखो वो जब पापा उनको थोड़ा ज़ोर से बोलते थे तो शी यूज टू स्टैमरिंग करती थी, डर जाती थी, एंड इवन नॉट एबल टू स्पीक द क्लियर सेंटेंसेस. यू डोंट नो, so with same imitation, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. So now here copying is there, what she speaks. If you stutter, okay, if you stammer like that, mother will have to take you to the doctor. हकलाकर बोलना जिसको हम कहते हैं, what is there to stammer? She never stuttered with other people. अब देखो यहाँ पर समझने की करना, वो कभी okay, हकलाकर नहीं बोलती थी दूसरे लोगों के साथ. Okay, she never used to stammer with other people. Had quite given it up. Okay, means उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है. Okay, means कभी ऐसा उसके साथ नहीं होता था. Means she stopped okay doing this. So she never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. But this used to happen only with father because she was trying so hard to say the words properly. She was trying her best to talk nicely with her father, but she was not able to. Okay, she was stammering, उसके अंदर आ ही जाता था. Okay, she was trying to be the clear, but okay, no, not at all. What's the matter? What are you looking so wretched about? Okay, so what's the matter with you? What are you looking so wretched about? Wretched about means why are you looking so unhappy? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. I wish, okay, mother, I wish you taught this child not to appear
on the brink of suicide. Okay, on the brink of suicide means about to commit suicide. So why is she behaving like that? Okay, what's wrong with her? Why is she, okay, looking so unhappy? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Okay, he was so big. His hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Now, here these words are for Kezia's father. He was so big. Okay, बहुत बड़े थे वो. His hands and his cheeks like Hulk. Okay, just kidding. मीन्स कहने का मतलब कि बहुत बड़े बड़े हाथ. ओके, बड़ी बड़ी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, जब वो यॉनिंग करते थे. ओके, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. ओके, जैसे उनके बारे में सोचना मीन्स जैसे कि कोई जायंट के बारे में सोचना, किसी राक्षस के बारे में सोचना. ऑन दी संडे आफ्टरनून, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन the drawing room to have a nice talk with father and mother. Now, one day, what did grandmother do? She told that go down and talk with your parents, okay, spare some time with your parents. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face. Here you can see stretched out on the sofa, handkerchief on the face, his feet on one of the best cushions, on the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring means, karate marna. Okay, like making sounds while sleeping. When you are asleep, okay, you make sounds with your nose, so that is snoring. So father and mother, she used to go to talk with them on Sunday, but both of them were busy. Mother was busy reading the books, okay, magazine, newspaper, and father was sleeping on the sofa and covering his head with handkerchief. So usually, my dear students, this happens in the family, that parents do not spare much time with their kids. Now, even if we talk about this such situations when we are locked down, okay, parents are like busy with the cell phones or means other things and all. So this is actually, I am not blaming anybody, but this is what we need to learn. We need to spare the time with the children. What do they like? What do they want to do? Okay, what games they would like to play? So this is how we can make them happy, bring smile on their face. So by seeing both of them that they both were busy, the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. So she kept watching until walk. Okay, means जब तक वो उठ नहीं गए. ओके, और उठते ही वो अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते थे एंड आस्क द टाइम, कितने बजे हो गए, एंड देन ही यूज्ड टू आस्क द टाइमिंग, देन लुक्ड एट हर. ओके, एंड देन ही यूज्ड टू लुक एट कीजिया. डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? डोंट स्टेयर एट मी कीजिया, you are looking like a little brown owl. So that what he used to say. Now one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So now when one day grandmother told her that father's birthday was in the next week, so she suggested that you should make a pin cushion for your father as a gift to your father, so of beautiful piece of yellow silk. So that what the suggestion was given to Kezia. Now Kezia was really very excited that yeah, my dad's birthday. So she takes this, okay, very happily. Laboriously with her double cotton, the little girl stitched 3 sides, but to fill it with, that was a question. Now laboriously means with a lot of efforts or difficulty.
अब एक छोटे बच्चे के लिए पिलो बनाना मीन्स एक थोड़ा चैलेंजिंग काम हो सकता है. ओके, एक कुशन बनाना, ओके, पिलो कुशन बनाना, दैट इज़ अ चैलेंजिंग, बट शी लेबरसली विथ अ वेरी ओके एफर्ट्स विद दैट डिफिकल्टी शी टुक दैट एफर्ट्स, और उसने तीनों तरफ से मीन्स स्टिच कर दिया. सो शी दैट डबल कॉटन, ओके, दो आपको पता है कि दो लेने पड़ते हैं, और दोनों तरफ से मीन्स ये करके इस सब तरफ से उसने यहाँ से स्टिच कर दिया. बट वॉट टू फिल इन इट, अब लेकिन इसके अंदर फिलअप क्या करना, ओके, क्या इसके अंदर आना, क्योंकि कुशन बनाने के लिए, पिलो बनाने के लिए कुछ स्टफ तो चाहिए अंदर. दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, grandmother was out and she wandered into mother's bedroom. So grandmother was out and she wandered, okay, here and there. Wandered means went into by chance, wandered into mother's bedroom to look for some scraps, कि शायद कुछ मिल जाए ताकि मैं इस पिलो के अंदर डाल सकूँ और फिर इसको मैं पूरा सिल दूँ. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, और बहुत सारे sheets and sheets of paper पड़े हुए थे, पूरे के पूरे पेपर, ओके, उसने कलेक्ट किए. गैदर्ड स्क्रैप्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ्स और पेपर, ओके. सो शी गैदर्ड देम अप एंड टोर देम इनटू द टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन शीव्ड अप द फोर्थ साइड, ओके, और पूरे उसने स्टक कर दिया और यहाँ से भी उसने उसको पैक कर दिया और बन गया उसका पिलो कुशन. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट. Okay, that night there was lot of noise, okay, angry protest in the house. क्यों, क्या हुआ, आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है. Father's great speech for the port authority had been lost. अब पापा ने एक स्पीच तैयार की थी शीट्स एंड शीट्स ऑफ पेपर में, और वो टेबल पे रखी थी, लेकिन वो मिसिंग थी, वो मिल ही नहीं रही थी. रूम्स वर सर्च्ड, पूरे घर ढूंढ लिए सब. सर्वेंट्स क्वेश्चन, ओके, सर्वेंट को भी क्वेश्चन पूछा. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. मामा केजिया के रूम में आए. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम. केजिया, आई होप कि आपने कोई पेपर नहीं देखे हमारे रूम में, ओके, हमारे बेडरूम में जो कुछ पेपर, शीट्स ऑफ पेपर नहीं देखे. अब देखो ये लड़की कितनी इनोसेंट है, ओके. अगर उसे पता होता कि वो क्या है और कैसे है तो शायद वो झूठ भी बोल सकती. हाउ मच इनोसेंट सी इज. व्हाट इज हर रिप्लाई. ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. यस, मैंने देखे वो सारे शीट्स ऑफ पेपर, मैंने वो सबको फाड़ दिया क्योंकि मुझे एक सरप्राइज, ओके, तैयार करना है, फॉर द वन सरप्राइज. वट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. ये चीज़ के लिए फटाफट तुम नीचे आ जाओ, अभी के अभी, मदर चिल्लाती है. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज pacing to and fro, hands behind his back. Now, when she was dragged down, when she was brought down, her father was pacing. Pacing means moving to and fro, this side to that side, okay, means to and fro, hands behind his back in that position. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. अब ये देखो, damn thing. Damn thing means the birthday present what she prepared for her father. तो उस चीज़ को यहाँ पर जो फादर है वो damn thing बोलते हैं. See that the child's put to bed this instant. और अभी कभी इस बच्ची को बेड पर रख कर आओ, okay, means बेड पर, okay, लेकर जाओ. So the father is really very angry and calls even that what was that damn thing she prepared and all, but she was really very innocent. उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे नहीं पता था कि वो पेपर्स इतने इम्पॉर्टेंट थे जो उसने टीयर करके अपने पिलो, कुशन पिलो के अंदर उसने डाल दिए थे. So my dear students, that's it for today. We'll see the next part in the next video. Okay, thank you so much.